Our top focus story on the broadcast is this intense water crisis in Delhi and a blame game between the Aam Aadmi Party and the opposition BJP. Delhi's Water Minister Atishi has written a letter to the central government demanding additional water supply both from Haryana and from Uttar Pradesh. The Aam Aadmi Party has blamed Haryana government of not releasing adequate water, claiming that is the cause for the water crisis in Delhi. The BJP has hit right back, accusing the Aam Aadmi Party of indulging in politics and not ensuring Delhiites have adequate water. Bansuri Swaraj, BJP leader and candidate from Delhi, said that in March a meeting should have been held, a water crisis plan should have been prepared, but that wasn't done. The Aam Aadmi Party only indulges in politics and not governance. People in the national capital have been forced to take water from toilets, from public toilets, because there is no water. India Today's Milan Sharma joins us from the Aam Aadmi Party headquarters in Delhi. Pankaj Jain also joins us as people protest for water. But I quickly want to cut across to Milan first. Milan, bring us details of Minister Atishi's letter to the central government. Gaurav, Atishi has been speaking about how Haryana government is responsible for not allowing the required quantities of water into Delhi, and that is why they are facing issues with the Delhi water supply. Having said that, that is the claim that is being made by the Aam Aadmi Party-led government in Delhi, but the reality on ground is very different, Gaurav, because every day when we go to the ground and we go to these, areas and colonies which are inhabited just near Delhi's very posh colonies in South Delhi, or for that matter even in North, tankers and tankers are visiting throughout the day from the Delhi Jal Board, which is also under the Delhi government, and people are desperate for water, even for drinking water. The tankers are coming in, and a lot of places you have seen those very visuals, very strong visuals of tankers and people fighting for water, and that is the kind of crisis that Delhi is going through in temperatures that are soaring past 50 degrees. And of course, these people who vote for various governments in Delhi have to go through this kind of ordeal, and which is why now full-blown political war has erupted between the Aam Aadmi Party-led Delhi government and BJP, where the BJP is clearly, as you pointed out, saying that summer plans for water crisis should have been made by the government in the last 3 months. Why wasn't it done? And of course, the blame game that's going on between the BJP and the Aam Aadmi Party continues, as the Aam Aadmi actually tends to suffer, because of the water crisis. But Milan, tell me this, there are two aspects to the story. One, Aam Aadmi Party government claims Haryana hasn't released enough water. The BJP says if you go to Hathni Kund barrage, like officials did, the sanctioned quantity of water has been released. A war plan wasn't made, even though Met Department had predicted a hot summer. On the other hand, the BJP also claims that the Aam Aadmi Party is playing into the hands of the water mafia or the tanker mafia and making money out of this crisis. What's the truth on the water mafia front? Well, Shiv, when we speak to people on the ground, what they actually say is that the number of tankers and the number of money or funds that are spent by the Delhi Jal Board in sending the tankers, should have actually, these funds should have actually been utilized by the government in Delhi to provide piped connection in a lot of these colonies. See, when we talk about, people living in Vivekanand camp or Sanjay camp or, Kusumpur Pahadi and other such areas, more than, these colonies are also authorized and unauthorized. And that is why the pipe connections have not reached there after several years of the Aam Aadmi Party government being in Delhi. And what Atishi is actually talking about is the water supply that happens from Hathni Kund barrage, which is, of course, the supply that comes from Haryana. But the point here is that the water is not reaching the last level. It's about pipe connections. It's about where you don't have connections, the supply will not reach you. And in all those places where even, the water supply is, there are people who are complaining about water shortages. The power demand has jumped this time because the temperatures are soaring past 50. This was something, that was not really expected by the IMD. And the entire crisis has now fallen on the Delhi government to handle the summer crisis, which is both, of course, power as well as water together.
Stay with me, Milan, but let's talk a little in detail about the intense water crisis, the massive water crisis, and the problems that people in Delhi are facing. Not yet water riots, but people scrambling behind tankers with canisters and with buckets. Delhi reeling under severe heat wave. There's shortage of electricity, as Milan was just mentioning, and this has led to an intense and acute water crisis. People are scrambling behind those tankers. They're jumping on those tankers with pipes to get water. Now, these are images that you're not used to seeing in the national capital, but even in upscale areas, in New Delhi, Chanakyapuri, for example, people lining along the footpath waiting for the tankers. People are forced to fill containers of water from public washrooms. Delhi BJP held a demonstration at the Shahid Park and then a march from Shahid Park to the Delhi Secretariat. Basuri Swaraj, BJP leader, blamed the Delhi government and claimed that the Aam Aadmi Party has created an artificial water crisis. Because the Delhi government in turn has blamed the Haryana government, saying that water supply hasn't been adequate. Listen into both sides. इस वक्त दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की काफी किल्लत हो गई है। हम इस वक्त दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप में मौजूद हैं और लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है और इससे लोग अब यहाँ का जो सुलभ शौचालय है वहां से पानी भरने के लिए विवश हो चुके हैं। देखिए कैसे यहाँ पर लोग अपने अपने जो डिब्बे लाए हैं पानी के वो उसमें पानी भरकर यहाँ से लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे एक बच्चा जो है वो एक कंटेनर में पानी भरता हुआ यहाँ से भर के यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैसे लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चाणक्यपुरी का संजय कैंप इलाका है जहां पर पानी की काफी किल्लत जो है वो लोगों को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, जो सप्लाई का पानी है वो भी नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से लोग विवश हो चुके हैं कि यहाँ का एक जो शौचालय है वहीं से ही पानी भरकर अपने अपने घरों में जो है लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं। दीदी किस तरह की दिक्कत यहाँ पे हो रही है? सर पानी के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर लाइट चली जाती है तो ये शौचालय भी बंद होता है, तो बर्तन ले लेके हम यहाँ वहाँ फिरते हैं पानी के लिए। तो बाहर एक टैंकर आता है तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि अब बर्तन हमें हर रोज खाली लेके आने पड़ते हैं और कई बार तो काम धंधा स्कूल बच्चों का सब कुछ बंद हो जाता है पानी के कारण। नहाना धोने यस पीने का अगर टैंकर आता है यहाँ से तो हम नहा धोने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर यहाँ भी नहीं मिलता। लंबी लंबी लाइन होती है, इधर उधर बच्चे खड़े रहते हैं, बच्चे नहाने के लिए परेशान है पानी के लिए। You can look at how many cans and boxes the people have carried everywhere, and literally right now as we speak there is an argument that has ensued between one party and another because there is a lack of pipes right now. Ma'am, क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? क्या बात है? कुछ नहीं, पाइप के लिए बोल रहे हैं हम तो कि यहाँ पानी चला दे, वहाँ हमारा पानी रह जाएगा। So, you know, this is the problem because one person is trying to fill water here, the other person cannot do that over that side, and there are a lot of these cans that are still to be filled. I just want my camera person to show you, they have tied the cans with chains as well, and of course, you know, people are inconvenienced because there is no connection to their homes. This is a daily affair in the morning in areas like Kusumpur, Pahadi, and on the other side also, if we show you how you know, people are standing in lines and queues and trying to fill water for their daily needs. This is drinking water, and see, the pipe water is not flowing from here. Of course, that seems to be a big concern in the national capital right now because Delhi is witnessing a severe heat wave, and that is the crisis that people have to face daily in the national capital with escalating temperatures of heat wave and these areas not having a direct water connection to their homes. Delhi water crisis escalates daily in the summers, and the situation remains the same all year around. Later, it's every summers we see this kind of thing happening, and there is no end to the sufferings of people living in such colonies. With Jagannath, Milan Sharma for India Today. क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था 2013 में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है।
आम आदमी पार्टी के एक दशक के शासन में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में ले गई है दिल्ली जल बोर्ड को। और ये जो अभी भी इन्होंने 2,000 रुपए का ये जो फाइन लगाया है, ये भी कुछ नहीं अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए। आप जानते हैं कि एक वाटर का जो एक्शन प्लान है ये मार्च में ही बन जाना चाहिए था। IMD ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में भीषण गर्मी होने वाली थी। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, इन्होंने तब कोई कदम क्यों नहीं लिए? और ये वो सरकार है जो मुफ्त पानी की बात करती थी, आज दिल्ली एक एक बूंद के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी सरकार हरियाणा का जिक्र कर रही है, वो ये कह रही है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, कम आ रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। हथनी कुंड बराज पे अगर आप जाके देखें और जाके निरीक्षण हुआ है, जहाँ पे हरियाणा के भी ऑफिशियल्स है, दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट के भी ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये देखा कि हरियाणा तो बिल्कुल पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया का साथ देना चाहती है, उनको प्रोत्साहित करना चाहती है और इसीलिए पानी की किल्लत उन्होंने बनाई है। ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ संकट है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है।